Jan 22, and I have the customer ID who has placed this order, that is one, of the amount 5,000. Suppose this is my record. Okay. Suppose I have second order placed on again 1st January 22, but by the customer 2 with amount of 3,000. Then 3, that is on 3rd Jan 22, by the customer 1 for amount 3,500. Okay. So suppose I have this data. Fine. Now, if I want to find out that which order is placed by which customer, so I can find that out by the customer ID. How many orders are placed by customer A? How many orders are placed by customer A? Hmm? This is 2, right? Because this is order ID. Then we have date. Then we have customer ID. And then we have amount, right? So here the 1, 2, and 1, that are the customer ID. Now say, suppose how many orders are placed by customer C? 0. Customer C has not at all placed any orders, right? Now in DBMS, there is one concept which is known as Cartesian product. तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं ये चेक करूंगी कि भाई कस्टमर बी ने कितने ऑर्डर प्लेस किया. आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर दैट बी आईडी इज 2. So at that time I need to join the records of my customer and orders so that I can find out that which orders are placed by customer A or customer B or customer C or customer D. Many a times we will need to bring the data from multiple tables, and at that time we join that tables. Most of our join happens equi-join. Equi-join means जहाँ पे उन दोनों field का value same है. There has to be some field which is common between the two tables on the base of which we can perform a join. So that common field should have the same value. So see here, is there a record where we are having the same value? यहाँ पे आपका customer 1 है, यहाँ पे sale order में भी customer 1 है, so this is correct entry. Now here you have customer 1 and in the order you have customer 2, so that is not the record which we want. So this shouldn't be coming. Then again customer 1, and yes, we are having 1 in the third record, so it is fine, it is correct. Now second customer order में 1 है, तो ये तो match हो नहीं रहा है, that two fields are not having the same value, so will not have that. Then the same value, that is known as equi-join. Okay. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि सारे दोनों टेबल का सारा कॉम्बिनेशन लाके दिखा दे, बट दैट कॉम्बिनेशंस आर ऑफ नो यूज. यूज कहाँ पे आता है? व्हेन बोथ द फील्ड्स आर हैविंग द सेम वैल्यू, then only it is of use, because now when I get this output, I can find out that how many orders are placed by A, how many orders are placed by B. अभी तक हम सिर्फ ऑर्डर टेबल का यूज करते थे, तो उसके अंदर क्या क्लाइंट का नेम है, कस्टमर का नाम है? कैन आई फाइंड आउट दैट विच ऑर्डर्स आर प्लेस्ड बाय बी? बी के लिए पहले मुझे जाके उसका आईडी ढूंढना पड़ेगा. Then I need to go come here, find out how many orders are placed by customer ID 2. So I am doing manual work. And if we need to do manual
कंप्यूटेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस सिस्टम? अगर मैन्युअली जाके ढूंढना पड़ेगा तो फिर हम डेटाबेस सिस्टम का यूज ही क्यों करें? आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this help you to combine the content of multiple tables together. That is known as a join. There are different types of join. One is called natural join, which is also known as equi-join. Then we have outer join, inner join, full outer join. Now, what are all this? Let's see one by one each of them. Okay. इक्वी जॉइन समझ में आया? जहां पे दोनों फील्ड का वैल्यू सेम हो, दैट इज नोन एज योर इक्वी जॉइन. यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है? 1. तो उसके सामने सिर्फ 1 का रिकॉर्ड आना चाहिए. यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है? सेकंड रिकॉर्ड में 2 है, तो वहां पे सिर्फ 2 का रिकॉर्ड आना चाहिए, दैट इज 2B. ओके. थर्ड, वी आर हैविंग ऑफ कस्टमर 1, तो थर्ड वाले ऑर्डर में सामने सिर्फ कस्टमर 1 का रिकॉर्ड आना चाहिए. समझ रहे हो? हाँ. that is that is known as equijoin, that the value should match in both the tables. Okay, but now there are some records in the customer table who don't have a matching value with the customer table, order table. There are some customers in a customer table who don't have their matching values in the order table, 3 or 4. Customer 3 and 4, do they have a matching values in order? No. So they are not coming. If you see our joined data, are they coming 3 and 4 over here? हमारे joined data में हमें 3 और 4 दिख ही नहीं रहा है, right? Because this is equijoin. But if you do outer join, you can bring the records which are in customer but not in orders. That is known as left outer join. That is known as left outer join. It will show you the records which are in the left table but not in right. And there is a right outer join that shows record which are in right table but not in left. That are known as outer join. यहाँ पे customer table is a left table क्योंकि उसके record पहले आ रहे हैं, and then the right side table is your order table. So if there are some records which are in the customer table which are not in the order table and you want to show them, then we have to use a left outer join. And if there is some record in a order table which are not in the customer table that you want to show along with your joined data, then you have to use a right outer join. So suppose if we do left outer join, the output which you are getting of a join, this combined output, along with it, it will show you 3C and 4D. Right side table values will be kept blank. So it is showing you the joined output as well as the records which are in the left table but not in the right. That is known as left outer join. And same way, if there are some record in the right table which are not in the left hand side, you can use the right outer join. अभी हमारे केस में ऐसा नहीं है. हमारे केस में सिर्फ कैसा है कि कस्टमर ऐसे है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है. Okay? Got up to this? कैसे करना है दैट आई विल टीच यू. कंसेप्ट समझ में आया जॉइन का? Yes, ma'am. Join is used to fetch the records from multiple tables which are related with one another. अगर आप अपने वो वाले टेबल सोचो, प्रोडक्ट टेबल, सेल्स ऑर्डर डेट टेबल, तो in your sales order detail, your sales order is related to the sales order detail. Your product is also related to the sales order detail. दोनों में है, order ID भी है, product ID भी है.
डिटेल में आता है ना प्रोडक्ट आईडी। अगर वहां पे आपसे पूछूं कि भाई फ्लॉपी डिस्क कितना ऑर्डर हुआ है, सो इज फ्लॉपी डिस्क प्रेजेंट इन अ सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल? आपका सेल्स ऑर्डर डिटेल टेबल के अंदर हमने कहीं पे भी प्रोडक्ट का नाम लिखा है? हैव वी रिटन फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क और नो? बट वी आर हैविंग द प्रोडक्ट नंबर। अब वो प्रोडक्ट नंबर कौन से टेबल में से आ रहा है? फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। So if I join my sales order detail with my product table, I can get the name also. So joining is required when you want to fetch the records, the data from multiple tables which are related with one another. जो related नहीं है उनका दो टेबल में से लाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. When we fetch the data from multiple table when they are related with one another. Till they are not related, we don't need to fetch. Are you getting my point? Same way in your sales order table, we have customer number. If you want to find out how many orders the even has placed, even Barrows Thana, I think even was the name. So now even name is in a client table, client master. ऑर्डर टेबल में, सेल्स ऑर्डर टेबल में कहीं पे भी क्लाइंट का नाम नहीं है. एज वी हैव नॉर्मलाइज द डेटा, हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए, तो हम टेबल कैसे बनाते हैं जहां पे डेटा रिपीट नहीं होता है. पर जब अगर मैं कोई बिल बनाती हूँ तो आई शो द कस्टमर नेम. हम कभी ऐसा दिखाते कस्टमर 1 को 10,000 रुपीज पे करने के. हु विल नो हु इज C1, हु विल नो हु इज C5? वी शो द नेम so that they can call that customer and ask them to make the payment. डेटाबेस में हम डेटा रिपीट नहीं कर रहे सारे टेबल में बिकॉज हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए. बट जब हम क्वेरीज करते हैं, व्हेन वी वांट टू फैच द डेटा, वी नीड टू ब्रिंग इट फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. वी कैन जस्ट फैच इट फ्रॉम अ सिंगल टेबल. So at that time, we need to find, we need to bring the data from multiple tables which are related with one another. Clear? Conceptually समझ में आया what is join, when we use join? Yes or no? Yes. Everyone? सिर्फ एक दो लोग आंसर दे रहे हो, बाकी सब ज्वाइन क्या होता है समझ में आया. जब मल्टीपल टेबल्स में से हम डेटा, मल्टीपल टेबल्स विच आर रिलेटेड विथ वन अनदर, वहां से हम डेटा फैच करते हैं, दैट इज नोन एज ज्वाइन. ओके. नाउ Yes, ma'am. how to write join. Okay, that is the main thing. कंसेप्ट समझ में आया तो अब ज्वाइन लिखना सीखते हैं. ठीक है, ये डिलीट करते हो. लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू राइट अ इक्वी ज्वाइन. ओके, नाउ टू राइट अ इक्वी ज्वाइन, suppose we want to join this customer and order table. So we need to fetch the data. We need to fetch the data from both the tables, all the fields. अगर आपको ये सारे fields दिखाना है तो we will use a star. So select. Is it visible or should I increase the font size? It's visible. Okay. So select star from. Fetchy karna hai. See, joining is also fetching of the data. So query that we will use is a select query only. So select star from. But now we are fetching the data from two tables. That is customer, comma, order. Okay. Now the way of doing equijoin, there are multiple ways of writing a query. I will show you both the ways. So see here. Select star from customer, comma, order. These are the two table names. Fine. Now, if I don't write the condition and if I just press semicolon and enter, it will show me Cartesian product. It will show me all the possible combinations because we have not said that you join on some condition.
So it will show me record from both the tables. So it will do a Cartesian product. Okay. Now, but we don't want the Cartesian product. We need to do join. So select star from customer comma order. Now the join condition, as it's a condition, will write in a where clause where both the table are having the same field name, customer ID. Customer में भी field का नाम होगा customer ID and name. So the common field between both the table is a customer ID. Okay. So we are going to join the customer and order table on the field that is customer ID. Now, as the name are same in both the table, we need to differentiate them using the table name. Customer dot customer ID equal to order dot customer ID. So we are saying that you fetch the record from customer and order, but which records which are having the customer ID in the order table and customer ID in the customer table same. जो हमने किया ना, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था, फिर मैंने वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर लिए जिसमें ये दोनों आईडी सेम नहीं थे. तो कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं कि दिस टू आईडी शुड बी सेम. दैट इज योर इक्वी जॉइन. Clear? Yes or no? Everyone? This is one way of writing. Okay? Copy this. जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज. ये सब तो जितना लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा. Written? Write it fast. Huh? We can write the join condition in where clause and even in the from clause. That also we will learn. पहले simple सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम सब सीखेंगे. Now in the same situation, if we want to do the outer join, left outer join, मतलब customer में जो records है, which are not in the order and I want to display them along with the join, then here we need to give a plus sign in a parenthesis. जहाँ के additional records हमें देखने हैं, वहाँ पे हम plus रखेंगे in a parenthesis. This is your left outer join because we are putting it on the left side. If you put this plus sign on the right side, we are doing the right outer join. Okay? ये मैं समझ में नहीं आया. ये जो रिकॉर्ड 3C और 4D, इसका कोई भी एंट्री यहाँ पे है कस्टमर आईडी का ऑर्डर टेबल में? No. So if you don't have that, it is not going to display it in my join. क्योंकि join में हम क्या बोलते हैं, जहां पे ये दोनों आईडी, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी इन ऑर्डर टेबल सेम हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाओ. तो 3 और 4 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो मुझे दिखाएगा ही नहीं. पर अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड देखने हैं जो इसके अंदर ज्वाइन में नहीं आ रहे पर यहाँ पे है, एडिशनल रिकॉर्ड है, बट आई वांट टू फेच देम. कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई जो यूज हो रहा है वो भी दिखाओ और जो एडिशनल है मुझे वो भी देखना है. तो उस टाइम पे हमें ये प्लस साइन यूज करना है. तो वो यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखाएगा, ये 3 रिकॉर्ड ज्वाइन वाले दिखाएगा और उसके नीचे आपको दिखाएगा 3C एंड 4D.
पर इसका आपके ऑर्डर टेबल में कोई एंट्री है ही नहीं, तो जो ये ऑर्डर साइड का जो रिकॉर्ड है वो ब्लैंक रखेगा. It is just showing you that these two are the customer who have not placed any orders. ऊपर के दो के आपके ऑर्डर्स के साथ मैच हो रहा है, बट 3 और 4 ऐसे रिकॉर्ड है जिनका सामने मैचिंग ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड नहीं है. दिस इज द केस वेयर हम करेंगे एग्जांपल्स, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा. अभी सिर्फ ये सीख लो कि लिखते कैसे हैं, फिर कब लिखेंगे वी विल लर्न व्हेन वी विल डू द एग्जांपल ना, आपको समझ में आएगा. डोंट वरी. Just write कि अगर additional record which are not getting in the join, equi-join, and still if we want of the left hand side table, we will put this plus sign on the left hand side. और अगर right hand जो ऐसा कोई record जो order में है पर उसका ID customer में नहीं है, ऐसा अगर मुझे कोई record find करना है तो मैं ये plus sign यहाँ पे लगा दूंगी. मतलब यहाँ पे ये सी और डी नहीं दिखाएगा. अब क्या दिखाएगा, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर होता 4 और 4th Jan 22, सपोज हम कोई आईडी नहीं डालते, हम सीधा अमाउंट डाल देते 3300. इसमें जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ कस्टमर टेबल में है ही नहीं. और अगर मैं ये प्लस साइन यहाँ पे दिखाती हूँ तो वो क्या दिखाएगा, कोई भी कस्टमर नहीं दिखाएगा, वहां पे ब्लैंक दिखाएगा और सामने आपको दिखाएगा 4 Jan 22 customer blank and amount is 3300. जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि सपोज कस्टमर आईडी 5 डाला, 5 का रिकॉर्ड कस्टमर में है ही नहीं, तो आई वांट टू सी सच अ रिकॉर्ड इन ऑर्डर विच आर नॉट present in the client. I can see that. That is known as right outer join. अभी outer join नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो. We'll do lots and lots of example, तो उसमें आपको समझ में आने लगेगा. Don't worry. इक्वी जॉइन समझ में आया ना कैसे लिखते हैं. Okay. There is another way of writing the join, that is select star from customer natural join order on, you can specify the field on customer ID. In bracket you can specify. This is using words natural join. So you can do it using words natural join, or you can write the condition in a where clause. Both are allowed. Both are allowed. And the better option to write is on, and you can write here the condition that customer dot customer ID equal to this. So we are writing this condition in a from clause, that from customer natural join, or you can write only join, that will also work. Customer join another table order on this particular field. Okay, this is one way of writing. I always prefer this one, normal condition. ये कम, वो ज्यादा एडिशनल वर्ड्स और सब लिखने में मिस्टेक्स होने के ज्यादा होता है चांसेस. उसकी जगह पे अगर हम सीधा सीधा इक्वी जॉइन लिखे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग इट? विल यू डू 1-2 एग्जाम्पल तो ज्यादा समझ में आएगा.
हम्म, चलो एक क्वेरी लिखो, दो क्वेरीज लिखो, चलो। डिस्प्ले द, हाँ लिख लो प्लीज, जल्दी। ओके, राइट इट डाउन। Display the order number, order date, and customer number, customer name, and customer name who has placed that order. Display order number, order date, and customer name who has placed that order. Okay? And customer name who has placed that order. Second one, display order number, order date, and salesman name who has taken that order, and salesman name who has taken that order. Written both the queries. Yes, ma'am. Write it down fast, do it. Giving you 2 minutes, हाँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो, फास्ट है एवरीवन। Okay, so how will we write that? Select. Now we don't want to display all the fields. हमें क्या display करना है? Sales order में से sales order dot field name. Field names you need to write using the table name dot field name whenever you are using multiple tables. Okay, so sales order dot order number, comma, sales order dot order date, comma. Now we need a client name which is in which table? Client name कौन से table में है? It's in a client master. So client master dot name from. So we are fetching this fields from two tables. One is client master
and one is sales order. ओके, दो टेबल में से ला रहे हैं, कौन कौन से फील्ड डिस्प्ले करने हैं, तो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट एंड द नेम ऑफ अ क्लाइंट. So we are fetching it from these two tables where our join condition, so where client master dot client number equal to sales order dot client number. The ordering of this fields can be any. पहले ऐसा लिखो sales order dot client number equal to client master dot client number, then also it is valid. Both are correct. Okay? Fine. Got it, everyone? Have you all done this? सेम आप लोगों ने यही लिखा था. बोलो तो सही, आप लोग बोलते ही नहीं हो, पता कैसे चलेगा? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर से ज्वाइन करेंगे ऑन मंडे. ओके, क्योंकि एक बार में आई ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड, सो इट्स ओके, विल डू इट अगेन विथ मोर एग्जाम्पल्स. फाइन, पर सेम वे आप सेल्समैन वाला भी कर सकते हो. ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's end here. We'll meet on Monday and we'll do the join again. Fine? Don't worry.